So now we will see how to create a letter, how to create a label uh, by using OpenOffice Writer. So in the last session, we have seen how to create mail merge, how to use mail merge, and how to merge the database with the document which we have created. Now we will see how to create mailing labels. Mailing labels means on the letters you might have seen जो stickers आते हैं in which the name of the person to whom we want to send the mail or to whom we want to send the letter, and the name of the name, the address, the phone number, and other details which we want to send on the envelopes, which we can write in labels. So we can also create a labels by using database which we have created in the last session. So we will see how to create labels. We will go to File, New, Labels. Okay. Now after this, we have to first click on the option of entire page, synchronize content. This option is very important. You have to make sure that this option of synchronize content is ticked. Now we will click on labels. We will select the database which we want to create a label on. Since we have created a database student in the last session, so we will click on student database here. Now we'll click on the table name. Table name is also student here. Now we'll click on the field names. So basically I'll just remove the fields from here which are already specified over here. I'll remove the fields here and I will specify my own fields here. So I'll just take title. Okay, then after that name, and click on this arrow to move this field on the label here. Okay, give some space here. Then suppose place my cursor in the next line, press enter. The cursor is on the next line. On the next line I want address, and then click on this arrow. Address is appearing in the label here. It is showing the preview. Then click on phone number and click on this arrow. So now the label format is made. Okay. Now what we have to do is we want to print labels on multiple columns. ठीक है, जो हमारे जो मेलिंग लेबल्स हैं या मेल के स्टिकर्स हैं या एड्रेस स्टिकर्स हैं, वी वांट टू प्रिंट इट ऑन मल्टीपल कॉलम्स. तो हम यहाँ फॉर्मेट पे जाकर वी कैन ऑल्सो चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द लेबल फ्रॉम हेयर. So if you want to increase or decrease the height and width, you can do it from here. ओके, एंड यू कैन स्पेसिफाई कि एक पेज पे कितने कॉलम्स आने चाहिए लेवल के. सपोज आई वांट, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वन वन सिलेक्टेड होता है. सपोज आई वांट देयर शुड बी टू कॉलम्स एंड देर आर सपोज फोर रोज, क्योंकि मेरे पास सिर्फ चार ही रिकॉर्ड्स हैं. बट अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट मोर रोज ऑल्सो. सो आई एम टेकिंग टू कॉलम्स on each page. There should be two columns of labels, and click on save, and we are writing the name new for both the columns. So we have to basically what we have to do is we have to click on save. We have to specify the format which we have just made. Format में हमने ये horizontal vertical lines spacing specify करी है, and these are the preview which are shown over here. We can specify the height and width of the label, and we have to save this format. So I am saving it with the name brand new and type new and click on OK. ठीक है, and after that we have to go to the options and just make sure that synchronize is selected. Click on labels, and from here you have to select the brand that is new, which we have just given the name of the format here, and the type. तो ये जो हमने फॉर्मेट यहाँ स्पेसिफाई किया है जब हमने सेव किया था, वही हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है. ठीक है, क्योंकि हमने इस फॉर्मेट में टू कॉलम्स ले रखे हैं कि वी वांट टू कॉलम्स ऑन ईच पेज. सो वही हमने यहाँ से ब्रांड और वही टाइप हमने यहाँ सेलेक्ट करना है. एंड यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 2 into 3, तो टू कॉलम्स हैं एंड देर विल बी थ्री रोज. ओके, देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट. ओके, एंड एज यू कैन सी दीज लेबल्स आर प्रिंटेड ऑन द डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 लेबल्स प्रिंट होके आ रहे हैं, क्योंकि टू कॉलम्स और थ्री रोज थे, तो थ्री रोज आ रही हैं और एक एक पेज पे दो कॉलम्स आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम. यहाँ पर सिंक्रोनाइज लेबल लिखा हुआ आ रहा है. इसका क्या यूज़ है ये देखो अभी आप. फर्स्ट ऑफ ऑल अब सपोज आई वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज. इसका मैंने फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है. सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस लेबल एंड okay, let me select the label first and I will increase the font size of the label here. ठीक है, एंड देन आई क्लिक ऑन सिंक्रोनाइज. सिंक्रोनाइज से क्या हुआ, बाकी सबका फॉन्ट साइज भी इस लेवल के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो अभी हमने लेवल को सिंक्रोनाइज कर दिया है. नाउ आफ्टर दिस वी वांट टू प्रिंट द लेबल. अब क्या है, ये लेबल स्टिकर्स की तरह प्रिंट होके आपके आएंगे और आप उसको यू कैन पेस्ट इट ऑन एनी ऑफ द एनवलप्स. सो फॉर प्रिंटिंग आई कैन गिव द प्रिंट कमांड हियर.
You can see the page preview. This is how the labels will be printed. Two columns on each page. I'll close the preview option from here, go to file and go to print. If there is any printer attached, so you have to print form letters, click on yes. If there is any printer attached, it will print the document. You can see there are 4 records in my database. तो वो सब रिकॉर्ड यहाँ पर आपको शो कर रहा है. ठीक है, आई वांट टू प्रिंट ऑल द रिकॉर्ड्स, क्लिक ऑन ओके. Now, if the printer is attached, you can print the file. Since my printer, there is no printer attached to my system, I just want to transfer these labels to PDF. इसको मैं PDF में save कर सकती हूँ so that I can use it anytime. If I'm having these labels with me, I can use it anytime. I can take a printout anytime, and these are saved in a PDF format. Click on print. Select Microsoft Print to PDF and click on print. You have to give the name of the PDF file. I'm giving the name label. Okay. And since a file with name label is already created, so I'll just overwrite that file. I'll clicking on replace the existing file. Okay. Now I will open this label file which we have made. So I just search for label. This is the file. Double click and open. So these are how the labels are printed. Okay, and I can take a printout. I can cut these name, address, and phone numbers on whatever mailing labels I want to print it. I can print. So these are these. This is how we have made mailing labels. The by using the database which we have already created in the last session.